अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के, आज के सेशन के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को या उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअली प्रैक्टिकली करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थिंग विच वी कॉल्ड एक्सपी प्लानिंग गेम। दिस इज बेसिकली अ सिमुलेशन गेम which will simulate all the concepts which we have discussed in the extreme programming thing. In XP planning game, there are basically 3 roles. सबसे पहला रोल जो है वो हमारे कस्टमर का है, दूसरा रोल जो है वो हमारे डेवलपर्स का है, और जो तीसरा रोल है वो हमारे कोच का या होस्ट का है। ये 3 रोल्स आपको एक्सपी प्लानिंग गेम में मालूम होने चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड के ऊपर टीम ए बैठी है जिसके 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टीम बी बैठी है और जिसके 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब ये जो 2 टीम्स आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से हर टीम इंडिविजुअली कुछ वक्त के लिए डेवलपर के तौर पे बिहेव करेगी और कुछ वक्त के लिए यही टीम मेंबर्स एज अ कस्टमर बिहेव करेंगे। दिस इज बेसिकली द एसेंस ऑफ एक्सपी प्लानिंग गेम। अब इस गेम के अंदर जो हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था हमारा यूजर स्टोरीज का। अब जो यूजर स्टोरीज थी, जिस तरह आपको एक सैंपल यूजर स्टोरी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रही होगी, और यही सैंपल यूजर स्टोरीज मैंने दोनों टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द बोथ टीम्स कि वो जो उनके टेबल के सामने यूजर स्टोरीज पड़ी हैं उनको जरा एक बार देख लें। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी। इन यूजर स्टोरीज के अंदर सबसे पहले एक हर स्टोरी की डेफिनेशन बताई गई है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहली यूजर स्टोरी है मेक 20 एडिशंस। अब उसके बाद इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि जो 20 एडिशंस हर टीम मेंबर ने करनी है उनकी रेंज 0 से 100 के दरमियान होगी, और फिर एस्टिमेटेड कॉम्प्लेक्सिटी है हर यूजर स्टोरी के साथ एसोसिएटेड। अब ये जो एस्टिमेटेड कॉम्प्लेक्सिटी है ये एक्चुअल मिनट्स नहीं है, ये एफर्ट है जो हर टीम मेंबर या हर टीम समझती है उसको चाहिए हैं इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। और इसी तरीके से हर यूजर स्टोरी के साथ एक बिजनेस वैल्यू अटैच है। अब बिजनेस वैल्यू इज एक्चुअली अ बजट जो कि हर रिक्वायरमेंट के साथ हमें कस्टमर ने प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक सैंपल यूजर स्टोरी देख रहे होंगे, उसकी बिजनेस वैल्यू है 100 और नीचे पर स्टोरी का नंबर लिखा हुआ है और आइटरेशन नंबर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो दोनों टीम्स हैं उनको कुछ यूजर स्टोरीज मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई हैं जो कि उनके टेबल के ऊपर मौजूद हैं। जो इनका काम है, जो हमारी टीम्स हैं, इन्होंने सबसे पहले एस्टिमेशन करनी है हर स्टोरी की। मतलब दे हैव टू बिहेव लाइक अ डेवलपर, यानी इनको कुछ रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की तरफ से आई हैं एंड दे हैव टू एस्टिमेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दोस यूजर स्टोरीज या रिक्वायरमेंट। दैट इज स्टेप नंबर 1। अब जो स्टेप नंबर 2 है, उस वक्त यही टीम मेंबर एज अ कस्टमर बिहेव करेंगे। मतलब जो उन्होंने एस्टिमेशन की है पिछले फेज के अंदर, नाउ दे विल से कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 6 स्टोरीज की एस्टिमेशन की है, नाउ एज अ कस्टमर दे विल हैव टू डिसाइड। इनको मैं पहले एक टाइम बताऊंगा कि इनके पास फॉर एग्जांपल 20 मिनट हैं या 10 मिनट हैं टू इंप्लीमेंट दोज स्टोरीज। नाउ बीइंग अ कस्टमर दे हैव टू मेक अ इटरेशन प्लान के 10 मिनट के अंदर कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं जो वो चाहेगा फर्स्ट रिलीज के अंदर मुझे मिल जाएं। दिस इज अ रोल ऑफ अ कस्टमर विच दीज टीम मेंबर, ऑल ऑफ टीम मेंबर्स will have to play, and then they will again behave as a developer and they will then start implementing those user stories as per the plan. अब जब ये लोग प्लान बना लेंगे तो दे हैव टू फिल आउट द स्कोर शीट। स्कोर शीट से मुराद है मेरी प्लानिंग शीट जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, जिसमें ये यूजर स्टोरी का नंबर लिखेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एंड सो ऑन। और जब ये एग्जीक्यूट कर रहे होंगे अपनी इंप्लीमेंटेशन को, दे हैव टू फॉलो दैट प्लान स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये उस प्लान से डेविएट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये उनको यूजर ने बताई हैं कि मुझे इसी ऑर्डर में इंप्लीमेंटेशन चाहिए है। हमारी टोटल 2 आइटरेशन होंगी और हर आइटरेशन के अंदर सबसे पहला फेज होगा हमारा एस्टिमेशन का, जो ये एज अ डेवलपर करेंगे। दूसरा फेज होगा हमारा जो कस्टमर है वो यूजर स्टोरीज को सिलेक्ट करेगा जो इंप्लीमेंट होंगी, और तीसरे फेज के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन का फेज है यही टीम मेंबर दोबारा से डेवलपर के तौर पे बिहेव करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दोज स्टोरीज। ये तो हो गई ओवरव्यू। अब जो गेम रूल्स हैं,
Now I would like to request both the teams के वो अपने जो टेबल के ऊपर एनवेलप पड़ा हुआ है उसमें से स्कोर शीट वाली शीट अपने निकाल के अपने सामने रख लें along with the pencils which are available in the envelope. Now in each of the envelope there is a separate sheet for the scoring, which we call the iteration planning. As you can see on the screen right now, the planning sheet basically it refers to the iteration number, the group name, and the story number which the customer will decide that the team has to implement while they are doing this activity. Now we will start the first phase of the first iteration, that is the estimation phase. As students, you can see on the screen, for this estimation phase, you people have 10 minutes. I would just like to remind that in this phase, you have to read all the user stories which are available in front of you. And for each user story, there is an associated task also, which is behind the papers. And to perform this task also, you have the envelope in front of you, and you can take out the material also from the envelope. For example, for a particular user story, you need dices. So the dices are available in the envelope. And for some task, you need some balloons. So balloons are also available in this thing, in your envelope. But for the estimation phase, you don't need these things. Now on my go, the countdown of 10 minutes will start. And if you have any questions, relevant questions, then you can ask me. The discussion time will be a part of your estimation time. Mean, अगर आपके 10 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं और आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और दोनों टीम्स, तो दोनों टीम्स का टाइम वो 10 मिनट में इंक्लूडेड है. मतलब मैं रुक के आपके आंसर के मतलब आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगा, वो आपकी कंटिन्यूस हैं. एंड मेक श्योर यू शुड ट्राई टू एस्टिमेट ऑल ऑफ द यूजर स्टोरीज, राइट. अच्छा जी, अब ऑन माई गो 10 मिनट का टाइम स्टार्ट होगा और यू हैव टू नाउ स्टार्ट द एस्टिमेशन फेज. ओके जी, your time start right now. Start. You can use the extra paper which is available in front of you. Read the stories very carefully. Just a reminder, right now both the teams are behaving like a developer. They don't have to behave like a customer. अभी priority decide नहीं करनी किसी ने, सिर्फ estimation करें. Excuse me, sir. My question is that the complexity of the user story lies between 1 and 6. 1 is for the lower complexity or 6 is for the maximum higher complexity. Exactly. It means that you can do this task very easily, and by 6 you mean that you need more time or more effort to implement the same task. And impossible is more than 6. And we have 10 minutes for one story. No, you have 15 minutes for all the stories to implement it, and 10 minutes to estimate them. All the stories. You have to just estimate them. Don't do it. सर मेरा क्वेश्चन है स्कोर एटलीस्ट 200 विद 3 डाइस वाला. उसमें हमने ये करना है कि इन वन थ्रो जो है वो हमने 200 जो है ना उसकी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है. तो इसके लिए ये प्रोबेबिलिटी है कि आई मीन के आपका एक थ्रो में वो शायद आ जाए. I will explain it. This, if you get 1 on a dice, that will be counted equivalent to 100. And if you have a 2 on the dice, that will be 2. I mean 2 point. 3 is equal to 3 points. 4 is equal to 4 point. 5 is equal to 5 point. And 6 is equal to 60 point, which is written. On that basis, you have to count the values which you will get. I just want to remind both the teams, while calculating the estimation, you have to keep this thing in mind that implementation should be very accurate. If you have to inflate a balloon up to some centimeters, so it should be accurate enough. You will get the equipment for that also. Excuse me, sir. Sir, the 3 user stories on which 40 numbers are for addition, 20 for subtraction. Okay. These are the tasks which you have to implement. These are 3 tasks out of 6.
which you will be doing during implementation. Right now, you just have to estimate them. Fine, Don't sir. implement them. Thank you. Now, team members, after the completion of the estimation phase, now we will jump to the planning phase of the XP planning game. In this phase, now all the team member will now switch their roles. Previously, you were working as a developer. Now you will have to behave like a customer. मतलब जो आपने estimation अभी की है previous phase के अंदर, now you have to set the priority behaving like a customer के out of 6 user stories जो आपने phase 1 में estimate की हैं, अब आपको कितनी आपको सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज जो कि आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं. रीजन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि प्लानिंग फेज के लिए आपके पास टाइम है 5 मिनट्स और इम्प्लीमेंट जो आपने करनी है आउट ऑफ 6 यूजर स्टोरीज वो है 15 मिनट्स. नाउ यू हैव टू प्लान एज पर द बजट. बजट आपके पास है 15 मिनट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट और जो आपने अब प्रायोरिटी सेट करनी है वो उन्हीं 6 यूजर स्टोरीज की बेस पे करनी है जो आपने प्रीवियसली एस्टिमेट की हैं. अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उनकी इजीनेस के हिसाब से आप प्लान कर लें या उनकी बिजनेस वैल्यू के हिसाब से उसको आप प्रायोरिटाइज कर लें. एंड में जिस ग्रुप की बिजनेस वैल्यू ज्यादा होगी वो विनर होगा. तो आपने ये दोनों चीजों के दरमियान बैलेंस रखना है कि आपने एस्टिमेशन को सिर्फ कंसिडर नहीं करना, एस्टिमेशन टाइम को, और सिर्फ बिजनेस वैल्यू को आपने एस्टिमेट नहीं करना, उसको आपने कंसिडर नहीं करना. टाइम आपके पास 15 मिनट होगा अगले फेज के लिए, लेकिन इस फेज के लिए जो हमारा प्लानिंग फेज है आपके पास 5 मिनट्स हैं. स्कोर शीट आपके सामने है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं. स्कोर शीट के ऊपर आपको ग्रुप नेम लिखा हुआ आ रहा है. यू हैव टू फिल दैट आउट वाइल अभी आपने कुछ नहीं करना, जब मैं गो बोलूं तब करना है. ग्रुप नेम आपने यहाँ पे लिखना है. उसके बाद आपको यहाँ पे 7 कॉलम नजर आ रहे होंगे. आपने सारे के सारे फिल नहीं करने, आपने सिर्फ स्टोरी नंबर इसमें लिखनी है, स्टोरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और एस्टिमेशन लिखनी है. ठीक है जी. और उसके बाद बिजनेस वैल्यू लिखनी है. ये 4 कॉलम आपने आउट ऑफ द 7 फिल आउट करने हैं बस. मतलब आप जब प्लान कर रहे होंगे आप स्टोरी नंबर आप डिसाइड कर लें कि हमें आउट ऑफ 6 फॉर एग्जांपल स्टोरी नंबर 5 पहले करनी है. मतलब जिस ऑर्डर में आप यहां स्टोरी नंबर लिखेंगे दैट विल बी योर ऑर्डर ऑफ इंप्लीमेंटेशन. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. वंस यू विल डिसाइड के आउट ऑफ 6 मैंने किस ऑर्डर में इंप्लीमेंट करना है, यू हैव टू स्टिक टू दिस इंप्लीमेंटेशन प्लान. दिस इज बेसिकली योर इंप्लीमेंटेशन प्लान, यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है जी. अब ऑन माई गो 5 मिनट का टाइम स्टार्ट होगा. ठीक है. यू हैव ऑल द यूजर स्टोरीज इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ यू हैव टू ऑन माई गो. अभी नहीं, जब मैं बोलूं तो आप लोगों ने आपका 5 मिनट का टाइम स्टार्ट होगा. एंड जस्ट अ रिमाइंडर, ड्यूरिंग दीज 5 मिनट्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी राइट. ठीक है जी. ओके जी. Your time starts right now. Implementation time आप लोग का 15 minutes है. Keep this thing in mind. All the equipment will be provided. Now students, after the planning phase, now we will actually jump into the implementation phase. One or two things both the teams have to understand now, that in the implementation phase you will be awarded business point only if you have completed that task. यानी if अगर आपने वो task आधा किया है you will not get marks. यानी for example अगर 20 additions करनी है, आपने सिर्फ 10 की हैं तो आपको उसका 0 मिलेगा. पॉइंट नंबर 1 वो इवेल्यूएट नहीं होगा. और दूसरा कि जो फॉर एग्जांपल एक टास्क आपने प्लान किया हुआ था एंड यू आर अनएबल टू डू इट, तो उस टास्क के जितने बिजनेस पॉइंट्स है आपके एक्चुअल मार्क्स में से उसके हाफ डिडक्ट हो जाएंगे. अगर आपने टास्क प्लान किया हुआ है एंड यू आर अनएबल टू डू इट, फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस वैल्यू थी 200 और जो आपके टोटल बिजनेस आपने पॉइंट्स अर्न किए हैं वो फॉर एग्जांपल 1100 है, तो उस 1100 में से 200 का हाफ यानी 100 डिडक्ट हो जाएगा. वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी. यानी जितने भी आपने पॉइंट्स अर्न किए हैं एक फेज के अंदर वो आपकी वेलोसिटी कहलाएगी इस एक्सपी प्लानिंग गेम के अंदर. ठीक है. और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोथ द टीम्स यू कैन नॉट डू द टास्क इन पैरेलल. यू विल हैव टू पिक वन यूजर स्टोरी, कंप्लीट इट और अबंडन इट. उसको छोड़ दें, या तो एक स्टोरी पे काम करें या उसको छोड़ दें. ठीक है. इन पैरेलल 2 स्टोरीज आप नहीं कर सकते, ये इसका रूल है. यू हैव टू कंप्लीटली
डू अ वन टास्क और रिमूव इट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए एक सैंपल मतलब एक सैंपल शो करता हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू इवेल्युएट दिस थिंग, हाउ यू विल बी इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे फॉर ईच फेज your total business points will be counted and that will be marked as the velocity, और दोनों phases की velocity add होगी दोनों iterations की, और जो भी और जिसके भी points ज्यादा होंगे after reduction और addition, उस वो टीम इस कंपटीशन की विनर होगी। अभी हम फेज वन के आखिरी आइट्रेशन के ऊपर हैं, यानी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन फेज के ऊपर हम लोग मौजूद हैं, ठीक है जी। अब हम लोग शुरू करते हैं। ऑन माई गो the time for or the budget for the implementation phase is 15 minutes. On my go, you will start the implementation phase, and keep this thing in mind, during implementation phase you cannot ask a question from me. जो आपने प्लानिंग और उसमें कर दिया है अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, एस्टिमेशन में, ऑन दोज बेसिस यू हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट इट, इधर रॉन्ग और करेक्ट। और जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाएगी, एक बात याद और रखें दोनों टीम्स, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन यू कैन नॉट से कि सर मैंने एक टास्क कर लिया है आगे चेक कर लें। योर ऑल द टास्क विल बी इवेल्युएटेड एट द एंड। जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा उसी वक्त आपके सारे टास्क वैल्यूएट होंगे। ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन आपका टास्क वैल्यूएट नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और, जो डाइस वाली प्रॉब्लम है, डाइस को आपने उस वक्त तक रोल करना है जब तक यू फील कि यू हैव सॉल्व अ यूजर स्टोरी, यानी उसको उस हालत में छोड़ दें। डोंट टच दैट डाइस, और अपनी जो आपकी प्लानिंग शीट है उसके ऊपर वो जो स्टोरी इंप्लीमेंट की है उसको टिक कर लें। फॉर एग्जांपल आपने यूजर स्टोरी नंबर 4 को आपने कर लिया, जस्ट टिक दैट स्टोरी इन द प्लानिंग थिंग। और जो आपका प्लानिंग है यू कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दैट ऑर्डर। जो भी आपने प्लानिंग फेज में लिखा हुआ है अपना ऑर्डर, उससे डेविएट नहीं होगा। मैंने उसी प्लान की बेस पे आपको वैल्यूएट करना है, ठीक है जी। और जो सी स्टोरी करते जाए उसके सामने टिक करते जाएं, ठीक है। और डाइस को मैं फिर कह रहा हूं उसी हालत में छोड़ दें जब आप फील करें कि हाँ जी वो मेरी स्टोरी कंप्लीट होगी, डोंट टच इट, ठीक है। और आपके सामने बैलून्स मौजूद हैं जो आपने निकाल लिए हैं, एंड यू हैव द मेजरमेंट इक्विपमेंट। जब आप बैलून को इन्फ्लेट करें तो यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है जी। नाउ ऑन माई गो 15 मिनट्स विल स्टार्ट। For the implementation purposes, both the team have now taken out 3 dices, 12 balloon, and 1 equipment to measure the circumference of the balloon from the back. And these 3 things are available individually on each table for implementation purposes. Now, students, for implementation purposes, I will show you the 6 user stories which were given to each of the team individually, and they have estimated it. The first user story which you can see on the screen is to make 20 additions, and the description is all the numbers are between 0 and 100, and the estimated complexity is from 1, 2, 3, 4, 5, 6 or impossible, and its business value is 100, and this is iteration number 1, story number 1. Story number 2 is to make 40 additions. Description is all the numbers are between 0 and 1000. Estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and impossible, and its business value is 300. And this is story number 2, iteration number 1. And the story number 3 is to inflate the 5 balloons, and the description is to a circumference of at least 40 centimeter, and they have to tie a knot in each of the balloon. And its estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6 or impossible, and its business value is 200, and this is story number 3. And story number 4 is to inflate the 5 balloons, and they have to inflate the balloon up to the circumference of 40 centimeter, and they have to tie a knot in each of the balloon. And its estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and impossible, and its business value is 100. And this is iteration number 1 and story number 4. And the next task is, or next user story is to make 20 subtractions, and all the numbers are between 0 and 100, and its estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6 or impossible, and its business value is 200. And this is story number 5, iteration number 1. And the last user story is to score at least 200 with 3 dice, and where 1 refers to 100, if a 1 come on the dice it will count it as 100, and if 6 comes on the dice it will count it as 60.
and the estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6 or impossible, and its business value is 400. And this is story number 6, iteration number 1. Out of these 6 user stories, each team have developed their individual plan as per their priority, and they will now be implementing these user stories as per their implementation plan in the implementation phase. एक्टिविटी को टिक करते जाइए, जो होती जाए, जो एक्टिविटी होती जाए उसको टिक करते जाए एज पर प्लान. वो नहीं, सिर्फ टिक.
Now it seems that both the team have done their work. Now I will start evaluating their work, and then I will show the result which team has earned more business points based on their work. Now I will first go to team A, and their iteration plan is with me, and their first task was to do story number 6, that was score 200 with 3 dice. That means 1 for 100, 6 for 60, 200. Your second task was make 40 additions. Okay, your next task was to make 20 subtractions. Your next task was to inflate 5 balloons up to 40 centimeter. Okay, ji. Now your next task is to make 20 additions. Now I'm going to evaluate their last activity, which was story number 4, and then they have to inflate 5 more balloons. Now I'm done with the evaluation of team A, and I will go back to team B for evaluation. Okay, now give me your evaluation plan. First, inflate 5 balloons. 40 पे कर दें इसको. 40 सेंटीमीटर पे कर देना. आपके कमजोर बैलून हो गया मुझे. Okay, ji. Now I will go back to their iteration number 2. The next problem they have solved. This is story number 1. They have to make 20 additions. Okay, ji. I've done with the story number 2. The next planned story was story number 4. That was to inflate 5 more balloons. Okay, ji. I am done with this, their third story, and now I am going to test their fourth story. That was to make how many subtractions? 20 subtractions. Now I am going to evaluate their story number 6. That is, they have to score at least 200 with 3 dice. So on dice 1 they have 1, dice 2 they have 1, and dice 3 they have 4. Now can you explain how this is more than 200? Actually 1 stands for 100. Okay. Okay, and we have 2 ones, so it means we have 200, right?
and it is mentioned on the page that 6 stands for 60. So we have assumed that the 4 is equal to 40. That's why we have 240. 4 is equal to 40. Right. What if 4 is equal to 4? This could be the other option, but we have more than 200. Well, okay, now I'm going to evaluate their last story. This is an example that they don't have the clear understanding of the requirement. There are multiple answers to it, and they have jumped to the right answer. Okay, your next story was story number 2. Yes. That is to make 40 additions. Give me this. I'm going to evaluate this. I have done with the evaluation of both the teams, and I will be compiling the results of the iteration 1, and I will be discussing with the result with the teams in their debriefing session. Thank you. Okay, ji, I have compiled the results of both the teams, and I am going to announce their estimated business value which they have estimated, and their earned business value, and my observations on their results, and the velocity, that means the sum of all the earned business value for the iteration 1. For team A, the estimated business value for this they have estimated was 1300, and their earned business value is 1000. They have made one mistake in story number 2, and their velocity is 1000. So their total earned business marks are 1000 with one mistake. Now for team B, their estimated business value was 1300. Their earned value was 1000, and they have made two mistakes, but yet their velocity is 1000 because they have wrongly evaluated the two stories, but the two stories were of low business value. So in the end, the velocity of both the team is the same, but the number of errors are more in team B as compared to team A. So overall, there is no winner yet as of iteration number 1. Okay, ji. Now we will proceed to iteration number 2. Thank you. Okay, ji. After having the results of the iteration number 1 of XP planning game, we will now jump to the last iteration, that is iteration number 2. There the phases are the same, but the time required to do each phase is less than the previous one. The total time for iteration number 2 is 20 minutes. The time for estimation is 5 minutes. The time for planning is 5 minutes. And the time for implementation is 5 minutes with a debriefing session of 5 minutes each. So the total sum would be 20. And both the teams, team A and team B, they have to repeat the same exercise. They have already been given the user stories and along with their required task. Now all they need to do is that within next 5 minutes on my go, they have to start estimating their user stories which they can implement it. Okay ji, both the teams on my go, you have exactly 5 minutes to do this task. Okay, start. सर मेरा क्वेश्चन जो है वो स्टोरी नंबर 9 से है. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बैलून्स हैं उनको 100 सेंटीमीटर तक वो फूल भी सकते हैं या नहीं. This is basically you have to estimate. You have to do this estimation. I cannot give you a clear-cut answer whether they can be inflated up to 100 centimeter or not. This is you have to estimate whether it can be done or not. Excuse me, sir. I want to ask one question. Question is about these stories. Implementation तो भी हमें start नहीं करनी ना. अभी we just need to plan the things. You just need to estimate the thing. Estimate the thing. Sorry. Not the planning. The same thing which you have done previously. Thank you, sir. Okay. Now, after the estimation phase, both the teams should have the score sheet in front of them for the planning purposes.
So they have the score sheet in front of them, and on my go, they have 5 minutes to plan this activity for the planning purpose, and on my go they will start working. Start now. स्टोरी नंबर 10 से सर मेरा क्वेश्चन है कि गुब्बारे जो हैं वो फुला के फाड़ने हैं या Yes, it is written you have to burst 5 balloons. Burst means there should be some air in it. उसी वक्त सर फौरन या फुला के रख Obviously. देने हैं उसके बाद फाड़ना? No, you don't have anything to burst them. कोई आपका पेंशन नहीं है. हाँ You have to burst them by overfilling them. ओके हवा इतनी हो कि वो उसकी जान निकल जाए. ठीक है थैंक यू एक्सक्यूज मी सर Yes. एक क्वेश्चन है सर स्टोरी नंबर 8 से Story number 8. कि इसमें जो डिवीजन है उसमें डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं? You have to make 10 divisions. It's not written whether the decimal should be there or should not be there. It's your option. थैंक यू सर Excuse me, sir. I want to ask one question, and the question is about story number 8. And my question is कि जो हमारे पास points decimal में आएंगे, हमें उस किस level तक उनको लिखना है? There is no limit. It's up to you. You have to go. You can go either one place after decimal or 2 place, but you cannot. You have to go after decimal. One place. There is no fixed thing written. Thank you, sir. Okay, Ji, for iteration number 2, I would just like to mention all the user stories. In the iteration number 2, both the teams have been given 5 user stories, and they have already estimated it, and they have created an iteration plan for that. I would just want to discuss these user stories. User story number 7 is to make 15 multiplications, and all the numbers are between 0 and 20. Estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and impossible. Its business value is 200, and this is iteration number 2. The next story is that the students have to make 20 divisions. All the numbers are between 0 and 200. The estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6, impossible. Its business value is 300, and this is story number 8, iteration number 2. The next story is they have to inflate 6 balloons up to the circumference of at least 100 centimeter, and they have to tie a knot in each. Their complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6, impossible. Its business value is 200, and this story number 9, iteration number 2. The next story is the students have to burst 5 balloons, obviously by overfilling it, not by pressing it with the pencil. The estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6, impossible. Its business value is 500. Story number 10, iteration number 2. And the last story is that they have to score at least 100 with 3 dices. In one throw, 1 count for 100, 6 count for 60. Estimated complexity is 1, 2, 3, 4, 5, 6, impossible. And its business value is 100. Story number 11, iteration number 2. Now the students will start the implementation phase on my go, and they have exactly 5 minutes to implement the implementation plan which they have created. Okay, Ji, start now. बहुत ज़्यादा
100 now. Okay, after the completion of the implementation phase, now I'm going to team A and I'm going to evaluate them. I am having a look at their score sheet plan. They have implemented the story number 10. They have to burst 5 balloons, and I have seen that they have already burst it, and for that they have earned these values. For the next user story, there is user story number 11. You have to score 100 with 3 dices. 2, 1, okay, it's okay. It's fine. Their next user story was they have to make 15 multiplications. Where is your 15 multiplications? 15 multiplications. I'm going to check that thing. Okay, ji. I'm now going to check their last user story. That is, they have to make 10 divisions. I'm going to just check it. Okay, ji. The evaluation of team number A is done. Now I'm going to go to team number B for their evaluation. Okay, ji. Give me your iteration plan. You have to multiply 15 multiplication. Where is your 15 multiplication? Okay, I'm going to evaluate that. Now their next user story was they have to, what was the dice thing? They have to show 100 with 3 dice. Oh, 3, 4, 3, 1. How come this is more than 100? Sir, 1 stands for 100. So we suppose the other values 3 for 30 and 4 for 40, so it exceeds 100. more than 100. Okay, ji. Their next user story is user story number 9, that they have to inflate 5 balloons up to the circumference of 100 centimeter. And amazingly, they have done so. Let me evaluate that. How come this is 100 centimeter? Balloons are not of that capacity. Yeah, I know, but you can prove this. This should be your estimation. This is 92. So if I will go down, this thing will reduce. The maximum is 92. So this is not 100. You have to estimate this. 100 centimeter is not possible. This was impossible story basically. Thank you. Ji. And they have busted 3 balloons. I have checked that. And their last user story was division. Where was that? Okay, they have not done the division story. Okay, their evaluation is finished, and now I'm going to announce the results of both the team in short span of time. Thank you. Okay, ji. After the completion of the implementation phase of both the teams, I am now going to announce the result of first the second phase, I mean second iteration, and then the composite result of both the iterations. Now team A, they have estimated business value for iteration number 2 is 1100. Their earned value was 600, and they have attempted less but realistically. So their velocity for iteration number 2 is 600, and the mistakes which were occurred by group A was 2. They have misinterpreted user story number 7 and 8. Now I will come to team number B. They have estimated business value of 1300,
and their earned value is 300. They have estimated more, but they have scored less because they have estimated 5 user stories and they have attempted all of them, but only 2 were correct. And the major reason was they have underestimated that 100 centimeter balloon cannot be burst. It cannot be inflated. This comes to that their overall score for the second iteration is 300, I mean the velocity. And now I'm going to announce the result of both the iterations. For team A, the total result is 1000 plus 600 is equal to 1600 points. I mean the velocity is 1600. And for team B, the velocity of the previous phase was 1000 and the velocity of the current phase is 300 and it's come to 1300. So this shows that team A wins, and my observation would be here that team B overestimated some of the requirements and they have overplanned their requirements up to some extent. So from this result, it seems that team A is having more realistic approach toward the requirements or the user stories, and team B are having a bit overestimated estimates about the results. So this was all about the XP planning game, and we have discussed all the relative terms which we have discussed in the last lecture, and this is all about this lecture. Now we will see each other on next time. Thank you.